Good morning, class 7. Welcome back to your chemistry classroom once again. Hope all of you watched the last video. Today I'm going to start from change of smell in case of chemical reaction. So look at your book. In certain chemical reaction, a change of smell is seen to be observed. A fresh egg gets spoiled and turns into a rotten egg, or fresh food on keeping for a long time gets spoiled. Thus, a chemical change may have undergone, which may result in a change in odor. Foul smell may be evolved. मतलब after a certain chemical change, there will be a bad smell or odor just come out. Like when fresh eggs get spoiled and turn into rotten. Same way, if we keep the fresh vegetables for a few long times and it gets spoiled, then bad smell just coming out from it. Hence, evolution of an odd odor from food is an indication to avoid eating it. So normally ये जो bad smell निकल के आ रहा है, it indicates we should not consume it. Like activity 5. A piece of fresh bread is kept in open for a few days. A foul smell may be observed along with growth of fungus after keeping the bread for a prolonged time. मतलब नॉर्मली हम लोग जो ब्रेड खाते हैं फॉर अ फ्यू डेज अगर हम लोग ओपन मतलब एक्सपोज एरिया में उसको रखेंगे सो नॉर्मली एक बैड स्मेल भी निकल के आएगा विद द ग्रोइंग फंगस उसके ऊपर हम लोग फंगस भी देखेंगे तो नॉर्मली ये जो स्मेल निकल के आ रहा है इट इंडिकेट्स वी शुड नॉट कंज्यूम इट नेक्स्ट characteristics change evolution of gas. So it is the characters of chemical reaction and it also indicates the chemical change. Evolution of gas. In many chemical reaction, gas is seen to be evolved as one of the products. Activity 6. Reaction of iron with dilute sulfuric acid evolves hydrogen gas. Effervescence is seen. Look at it at first. Effervescence means formation of gas bubbles in a liquid during a chemical reaction is termed as effervescence. मतलब after a chemical reaction, when a gas just release with bubbles, that incident is also known as effervescence. मतलब एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद नॉर्मली जब एक गैस रिलीज होता है ये बबल्स फॉर्म करके तब ये इंसिडेंट को क्या बोला जाता है effervescence. So effervescence is a chemical reaction whereas a gas is coming out after a chemical change with a bubble. Look at the reaction. Chemical equation iron plus dilute H2SO4. सपोज ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग आयरन लिए उसके ऊपर से हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इट टर्न इनटू FeSO4 मतलब आयरन टू सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस and the color will be changed and the gas released as a form of bubbles. So total incident is known as effervescence. Laboratory preparation of gases from substances applying the relevant condition. Reaction of and gas evolve. Look at some example. Heat on potassium chlorate and manganese dioxide as a catalyst. Look at the chemical reaction. Potassium chlorate को हम लोग heat देंगे and whereas manganese dioxide act as a catalyst because it helps to increase the rate of chemical reaction and potassium chlorate decompose and it turn into potassium chloride plus oxygen gas. So oxygen gas evolved as a form of bubbles. So it also indicates it is a chemical change. Next, zinc with dilute hydrochloric acid. Zinc plus dilute hydrochloric acid it turn into zinc chloride plus hydrogen gas.
सो अगेन हाइड्रोजन रिलीज विद अ बबल्स, मतलब ये बबल्स फॉर्म करने के बाद रिलीज होता है एंड इंसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज इफरवेसेंस. Same way, heat on sodium chloride and concentrated sulfuric acid. Concentrated means it's pure. NaCl plus H2SO4. Concentrated and dilute. What is the difference? Dilute means जितना ml हम लोग एसिड लिए उतना ml उसके साथ पानी ऐड किया हुआ है, तब जाकर उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट. whereas concentrated means it's pure, मतलब पूरा का पूरा प्योर एसिड लिया गया है. So NaCl plus H2SO4 200 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग को इसको हीट देंगे एंड इट टर्न इनटू NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज हो रहा है. नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl हीट देंगे that turn into calcium chloride plus H2O plus carbon dioxide gas. यहाँ पे गैस क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नेक्स्ट, हीट ऑन सोडियम सल्फाइड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सोडियम सल्फाइड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हीट देंगे, क्या फॉर्म होगा? NaCl प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. So these are the common examples where heat is necessary as well as some catalysts are needed for the increasing the rate of chemical reaction. तो हम लोग क्या देखेंगे? नॉर्मली जो गैस रिलीज हो रहा है थ्रू केमिकल रिएक्शन, इट फॉलो द इफरवेसेंस, मतलब आफ्टर केमिकल चेंज गैस रिलीज विथ बबल्स and this incident is also known as effervescence. So student, hope all of you understood what I've discussed in this video. So for today, up to this portion.